Yeah, so hello everyone, this is Aditya and currently I'm working as a software developer. So I hope you guys are also doing well. So guys, like if you are looking for us IT jobs in big MNCs company, then this video is only for you guys. Basically now the hiring is going on, like in there is a one company guys, Qualcomm. In the Qualcomm company they are hiring like a for a, like associate developer, associate software engineers and also like a software developer. So if you are a freshers, then literally these both opportunities are very useful for you guys. So basically in this video I just cover all parts, like what is the required skills, what is the qualifications, what is the eligibility criteria and all, what is the selection process, everything guys. So make sure watch this video till the end guys. So for today now we start a video. I just show you, like just you see here, like Qualcomm off campus drive 26 is now open for associate engineer roles in Chennai location and Hyderabad and as well as Bangalore location. Candidate with the like pursuing with like BE, BTech, ME, MTech, MCA or related fields, all guys are eligible to fill this form. Like, and when I talk about the job role is like associate engineer and qualification is like just you see here, like BE, BTech, MCA, MTech or related field. And there is one interesting point guys, I just show you in the Qualcomm portal. यहाँ पे लाइक उन्होंने मेंशन ही नहीं करा कि किस ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हो और नहीं, लाइक 24, 25, 26 ऐसा इन्होंने यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं करा। तो सो गाइज ये लिटरली एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मेंशन ही नहीं करा है। सो गाइज आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लाइक एसोसिएट जस्ट यू सी हियर लाइक एसोसिएट इंजीनियर्स and the second one is just you see here like a campus hire engineer SW. So these both are very good opportunity guys. So now it comes to the here back here एंड लाइक इन माई पर्सनल ओपिनियन गाइज, लाइक उन्होंने तो वहाँ पे मेंशन नहीं करा है, लेकिन अगर आप लाइक 25 और 26 पास आउट हो तो गाइज आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ये लिटरली एक बहुत ही मतलब वो Qualcomm वाले ज़्यादा फ्रेशर्स को ही मतलब वो हायर करते हैं। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द सैलरी रेंज इज़ लाइक 15 to 20 LPA गाइज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक विच ईयर पास बैचेस कैन अप्लाई, जस्ट यू सर लाइक 26 ग्रेजुएट्स आर प्राइमरी टारगेट। लाइक अगर आपने 26 में आपका डिग्री कंप्लीट हो रहा है तो गाइज आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड लाइक इन माय ओपिनियन लाइक इफ़ यू हैव डन लाइक योर डिग्री इन लाइक 25 देन यू गाइज आल्सो एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म गाइज। लाइक 25 एंड 26 वाले अप्लाई कर देना, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर 24 वाले भी अप्लाई कर सकते हो गाइज, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा 24 वालों को। व्हेन आई कम्स टू द डाउन हियर व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड ऑल, सो जस्ट यू कैन सी हियर लाइक कैंडिडेट शुड नो वन और मोर ऑफ, लाइक अगर आपके पास सी लैंग्वेज, C++, पाइथन, जावा और टेक्निकल नॉलेज और लाइक सी शार्प, लाइक अगर आपके पास एक भी लैंग्वेज का नॉलेज है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा का है तो वो ज़्यादा बेटर है गाइज। When it comes to the down here, just use a good understanding of data structure, algorithm, object-oriented programming, operating systems, computer networks, embedded system, and software testing basics. Like for the testing engineering roles, obviously associate है तो वो तो डिपेंड करेंगे कि आपको वहाँ पे क्या वो लोग प्रोवाइड करेंगे। When it comes to the down, what is the selection process and online application? First is online application, second is like resume shortlisting, and the third one is like online assessment, and the next one is like a technical interview 1, technical interview 2, and then HR interview, and the next finally you got the offer letter. So these are the steps guys. So and here I just want to add one more point, like if you come here for the first time on these channels here, then please help me guys. Actually here I make only job hunting related videos guys. So if you want to, like if you find any job opportunities, then this channel is only for you guys. So help me guys, that's it. And also like if you have any doubt related to your career guys, then simply just drop me a comment. Definitely I will help you guys. From last 1 years I am working as a software developer, so literally I have very much good knowledge about the technology guys, what is that in market and trending nowadays going on and all. So guys if you have any doubt just drop me a comment, definitely I will help you guys. So now I move forward in this video. So where is the like job links and all, so just you see here like 26
campus hire associate engineer, this one guys. And when it comes to the down job description and all, so here when I talk about the minimum qualification is like just you see here like associate degree in computer science and electronic engineering related field, all guys are eligible. And when it comes to the down like preferred qualification is like bachelor's degree, like आपके पास like bachelor's का degree at least होना चाहिए guys. And when I talk about the like these are the skills guys, like C++, just you see here C++, TCL, Perl, Shell, scripting, these are the like technical skills guys. And when it comes to the down, so these are the things guys. So now I click it here apply now button. So here I upload my resume and all, so just it will take some time. Okay, then here I upload my resume and all, so it will take, yes guys, I want to receive monthly, okay, recommendation like अगर Qualcomm में हायरिंग्स आएगी तो वो मेरे पास मतलब मेरे ईमेल पे वो नोटिफिकेशन आएगी. सो आई एग्री हियर, सो मे बी इट विल टेक सम टाइम, सो जस्ट वेट गाइज. या दिस इज़ डन गाइज. लाइक इन माई लाइक अकॉर्डिंग व्हेन आई हियर, जब मैंने यहाँ पे अपने रिज्यूमे को अपलोड करा तो जो मेरे रिज्यूमे के अकॉर्डिंग से था यहाँ पे लाइक एल्गोरिथम, पाइथन, प्रोग्रामिंग, टेक्निकल प्रोफेंसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो उसके अकॉर्डिंग से यहाँ कीवर्ड मैच हो गया. इट मीन्स इसलिए मैं बोलता हूँ आपका रिज्यूमे का ATS स्कोर बहुत सही होना चाहिए. तो जब आप रिज्यूमे को बनाओ तो मेक इंश्योर करो आपका ATS रेट बहुत सही होना चाहिए. So when it comes to the down, so just I here and apply now button. So here I click the apply now button. So here we need to create the first account. Like if you come here for the first time on Qualcomm website, then first you need to create an account, and according to this here you need to put your email ID and whatever like password and all. So just you come here and apply this form guys. And when it come to the second opportunity campus hire engineering, so here I also applied my resume and all. So just you wait guys and just see what is the process and all. So here I select my resume and all. So okay, I have done open. So here I select agree button. Okay, so it may be take some time guys, so just wait for the some time. Just you see here like according to my resume, these are the like what I said keywords are matched with my resume. So my resume is good, so my resume ATS score is very good guys. So when it comes to so according to this here my like according to the job requirements, these are like skills are required. So ये सारे मेरे रिज्यूमे में प्रेजेंट है, तो इसलिए वहाँ पे वो ऑटोमेटिक मतलब उन्होंने कैच करा. So when it comes to the down here I apply now button. So here at is same guys, just you here need to create your email accounts and just here you put your emails and all. So when I move forward to the third opportunity, just you see your third opportunity is coming from Wipro company guys. It's like a trainee role. So and the location is like Noida location. So these are the like trainee guys, like if you have done your like a BCA, BSc, MSc and MCA degree like that, so you guys are also eligible to fill this form and make sure like आपने अपना डिग्री 25 और 26 वाले ही से अप्लाई कर पाओगे. सो गाइज ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है. सो अभी इसके लिए भी आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा. देन यू गाइज आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म. सो फॉर द टुडे गाइज आई एम डन. सो मिलेंगे एक नया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में के साथ गाइज. मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को हेल्प करूँ गाइज. सो मिलेंगे एक नया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में गाइज. तब तक के लिए थैंक यू गाइज.